everyone. Welcome to Arpita Sharma classes. I am Arpita Sharma, your educator. आप सभी का स्वागत है अर्पिता शर्मा क्लासेस में. जय हिंद एवरीवन. मैं हूं अर्पिता शर्मा, आप सभी की एजुकेटर. Today I am here on my channel with a very wonderful announcement. The announcement is that I am going to make a comeback on Unacademy Plus. Announcement ये है कि मैं Unacademy Plus पर comeback कर रही हूँ. Comeback means 4 to 5 months का गैप हो गया था Unacademy Plus के साथ. थोड़ा एसोसिएशन टेम्पररीली होल्ड पर था, बट अब वापस से Unacademy Plus के साथ एसोसिएशन शुरू हो रहा है. नाउ इसका ये मतलब नहीं है कि मेरे YouTube चैनल पर रेगुलर लेसन्स या वीडियोस नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है. रेगुलरिटी बनी रहेगी YouTube चैनल पर भी, टेलीग्राम पर भी. डोंट वरी. अनअकैडमी प्लस पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड मैं कोर्सेज लॉन्च करूंगी, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक से रिलेटेड कोर्सेज. ओके, ऑन अनअकैडमी प्लस आई एम नॉट गोइंग टू कवर होलिस्टिकली एवरीथिंग, एवरी सब्जेक्ट. नो, the most important topics, the most important subjects in the form of live free special classes or paid plus courses I'm going to take on Unacademy Plus. Okay, and the regularity, the Hindu analysis will be, as you know, it will be same on my YouTube channel. It will be uploaded without any break. संडेज को अपलोड नहीं हुआ करेगा. संडे को तो सेल्फ स्टडी डे होता है ना, तो संडेज आर मेंट फॉर सेल्फ स्टडी. सो ऑन संडेज देयर विल बी नो अपलोडिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल रिगार्डिंग द हिंदू एनालिसिस. बट यस, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे आई एम गोइंग टू रेगुलरली अपलोड द हिंदू एनालिसिस. डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव एनीथिंग असाइड. आई एम जस्ट मेकिंग अ कम बैक ऑन Unacademy Plus. I used to make 40 plus courses on Unacademy Plus. Now I'm coming back, making a comeback. 2 years का association था, वापस आना हो रहा है. Now on Unacademy Plus, I'm coming back with a wonderful course this time. The course is Complete Course on Art and Culture, UPSC CSE. Now I know that art and culture, many students, they find art and culture as very boring. Or some students, they think that art and culture is very easy. We can just go through previous year question paper, NCERT and हो गया काम. Some students, they say only current affairs based art and culture topics are important and we are going to look into that only. But see, art and culture, there are 4 to 5 questions in mains every year from art and culture. Then there are 8 to 10 questions every year from art and culture in prelims. Prelims में एक question कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का. In prelims, one question is of 2 marks each. That means that 16 to 20 marks in prelims are solely from art and culture. इसका मतलब 16 से 20 नंबर के जो questions हैं, जो marks हैं, वो art and culture के ही हैं. Now just imagine, एक बार imagine करके देखो, 16 to 20 marks. If you score, if you mark the answers of art and culture based questions correctly, 16 to 20 marks are in your hands. बस अज्यूम करो, अगर 16 से 20 नंबर आर्ट एंड कल्चर से आ रहा है और आप आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से मार्क करते हो विदाउट एनी मिस्टेक, तो 16 से 20 क्वेश्चन आपके हाथों में हो गए ना, राइट? एंड नाउ इफ यू आर स्ट्रॉन्ग, इफ यू आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन आर्ट एंड कल्चर, 4 to 5 questions in mains and GS paper 1 are under your control. Now you will ask, ma'am, what difference will it make? We can also score good in geography, in history, etc., etc. See, there is no difference. The sole motive of mastering art and culture is that your confidence will boost up. आपका देखो बिल्कुल इधर से उधर पर्वत नहीं हिल जाएगा आर्ट एंड कल्चर में अगर आपने पारंगत हासिल कर ली तो. डिफरेंस ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोरल बूस्ट अप हो जाएगा. 16 से 20 क्वेश्चन अगर आप सही से, आपको पेपर खोलते हो, देखते हो 16 से 20 नंबर तो आप ऐसे ही हासिल कर लोगे, तो कितना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, राइट? हिम्मत आएगी. ऐसी मेंस में 4 से 5 क्वेश्चन आप बढ़िया तरीके से आंसर कर देते हो और क्वेश्चंस आंसर करने की हिम्मत आ जाएगी, राइट? जरा भी डर नहीं लगेगा. आर्ट एंड कल्चर इज वेरी क्रूशियल for as an administrator also. You should have a very strong hold on art and culture. So I am coming back on Unacademy Plus with this important course on art and culture. Now this course will be a 10 days course. आपके ऊपर बोझ नहीं डालेंगे. 10 दिन का कोर्स है. Now it is not even a crash course. ये मत सोचना अरे मैम तो 10 दिन का क्रैश कोर्स करा रही है. No, it's not a crash course. It's a complete course. Complete course means, I'll just show you. In this course, I am going to take into account Nitin Singhania sir's book. I am going to take into account CCRT website, previous year question papers. I am going to take into account the NCERTs and other reference books. Spectrum की बुक होती है आर्ट एंड कल्चर पे, नितिन सिंघानिया सर की बुक हो गई, NCERT हो गई, CCRT वेबसाइट हो गई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए. There is nothing that you have to refer outside of this course.
if you enroll yourself in this course, then there is nothing extra that you have to do for art and culture. I'm also going to cover the current affairs based on art and culture. ऐसा नहीं है कि मैं current affairs नहीं cover करूंगी, वो छोड़ दूंगी art and culture से related. नहीं, last 2 साल के current affairs cover होंगे art and culture से related. Last 2 years current affairs will be covered related to art and culture. Then previous year question papers, last 10 years previous year question paper I am going to cover for art and culture. नितिन सिंघानिया सर की होलिस्टिकली पूरी बुक कवर होगी, राइट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो. ये मत समझना रहे इतना बर्डन इतनी सारी बुक्स नहीं, ओनली द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विल बी कवर्ड विच आर एग्जाम बेस्ड. PhD we do not have to do PhD in art and culture, okay? We have to study strategically and smartly. देखो हार्ड वर्क एक चीज होती है, हार्ड वर्क मतलब आप डेडिकेटेडली रोज टाइम टेबल बना के स्ट्रैटेजिकली पढ़ रहे हो. स्मार्ट वर्क इज आप वो पढ़ रहे हो जो रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए. व्हाट इज हार्ड वर्क? दैट यू आर डेली स्टिकिंग टू योर स्केड्यूल. बट व्हाट इज स्मार्ट वर्क? दैट यू आर फॉलोइंग ओनली दैट विच इज रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम. सो हियर वी आर गोइंग टू डू द हार्ड वर्क ऑल्सो एंड वी आर गोइंग टू डू द स्मार्ट वर्क ऑल्सो. तो इधर हम हार्ड वर्क भी करेंगे और स्मार्ट वर्क भी करेंगे. एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट इन द क्लास इटसेल्फ यू लर्न द टॉपिक्स. हम बिना लर्न किए बस आए पढ़े चले गए ऐसा नहीं होगा. वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट कम एंड अटेंड द क्लास एंड गो. नो, वी आर गोइंग टू कम सिट इन द क्लास. आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट यू लर्न इन द क्लास इटसेल्फ. मैं इतना आपको अपनी तरफ से गारंटी सकती कि आप क्लास में आओगे और लर्न करके ही जाओगे. आई विल मेक श्योर दैट थिंग्स आर इजी फॉर यू. Then we are also going to solve quizzes in the class itself. You can see over here, after the class, after each class, questions will be given and we are going to solve these questions from prelims and mains perspective in the class itself. Class के अंदर ही हम ये questions solve करेंगे. And also I am going to give you short handmade notes also. Class में आपको short handmade notes भी मिलेंगे. As you can see on the screen, these are the handmade notes which will be provided to you in the class itself. Clear everyone? इतना समझ आ गया? Now in the update section you will get the PDFs. Update section जो होता है वहां आपको PDF मिल जाया करेगा क्लास से 5-10 मिनट पहले ही, right? 5-10 minutes before the class starts you will get the PDF of that particular class. The class is starting from 14th April. Every day in the morning 8 AM. अब लॉकडाउन है, सब घर में ही है, तो सुबह 8 बजे तो आप टाइम निकाल ही सकते हो. यू कैन वेरी वेरी नाइसली स्पेयर आउट टाइम, 1 hour टाइम, 60 minutes की क्लास होगी. एंड डेली इन द मॉर्निंग फॉर 10 days 8 AM फ्रॉम 14th April द क्लास इज स्टार्टिंग. डाउट क्लियरिंग सेशंस विल बी देयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन विल बी देयर एज वेल. Clear everyone? So you can enroll in this class. The link is given below in the description box. नीचे description box में link दिया हुआ है, आप subscribe कर सकते हो. You can take a 1-month subscribe or subscription. You can take a 3-month subscription, and you can easily get 10% discount if you use my referral code Sharma20. अगर आप referral code Sharma20 use करते हैं तो आपको 10% का discount बहुत ही easily भी मिल जाएगा. Clear everyone? So I'll be waiting for all of you in the class. From 14th April the class is starting. Let's ease the learning process and let's master art and culture, because mastering art and culture means securing 16 to 20 marks in prelims and solving very easily 4 to 5 questions in mains. Thank you and have a wonderful day ahead. If you have any query, you can type your query in the comment section given below. The link to enroll in the class is given below in the description box.